Sound Lights Action. The 51st edition of International Film Festival of India kicked off on Saturday, albeit in a slightly low-key manner. This edition of IFFI is being held under the shadow of the coronavirus and was in a hybrid format, online and offline. The festival was inaugurated by the Union Minister for Information and Broadcasting, Prakash Javadekar, and actor, producer, director Sudeep Sanjeev. Cinematographer Vittorio Storaro has been selected to receive the Lifetime Achievement Award, and Bangladesh is this year's country of focus. This IFFI, the event, despite the travel restrictions and ban, will have celebrated film directors from world cinema including Argentina, Pablo Cesar, Prasanna Wangahate from Sri Lanka, Abu Bakr Swakshi of Australia, Priyadarshan and Rubaiyat Hossain of Bangladesh. A total of 224 films will be screened under different sections at the 51st edition, 15 of which will compete for the Golden Peacock Award. Our country focus this year is a neighboring country, the Bangladesh. We have the great confluence on the filmmakers and enthusiasts from across the world, thereby making the Vasudhaiva Kutumbakam, the Indian philosophy of the universal brotherhood, a reality. I'm happy to inform that, and we are conducting the event in a hybrid format. That is, and we will have the movie screening in the auditorium as well as on the online mode. The registration is nearly the 2,200 delegates and screening of nearly 200 movies in the physical format. The really pleasant to sign the kickstart of this event. The Union Broadcasting Minister Prakash Javadekar announced that multiple Academy Award-winning cinematographer Vittorio Storaro will be awarded and honored with the Lifetime Achievement Award at the ceremony, while the Indian Personality of the Year Award will be awarded to the actor, director, producer Vishwajit Chatterjee. फिल्म फेस्टिवल में 600 अंग्रेजी फिल्में आई, उसमें से 126 इसमें स्क्रीन हुई है और उसमें 85 फिल्मों का तो प्रीमियर है. 85 premieres in this Goa Film Festival is a huge story of success and importance which world gives for Goa Film Festival. भारत के भी 190 फिल्में आई, उसमें से 23 पैनोरामा में दिखाई जाएगी. जैसे इस साल कहा हाइब्रिड है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है. 7 थिएटर में फिल्में दिखेगी, लेकिन ऑनलाइन तो हर एक के लिए खुला है. इस साल का इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा श्री विश्वजीत चैटर्जी को दिया जाता है. उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए. मेरे सनम याद करिए, नाइट इन लंदन याद करिए, शहनाई याद करिए, बहुत सारी फिल्में. तो एक बहुत महान हस्ती जिनका और भी गौरव हो सकता है, उनके लिए ये इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा. और ये पुरस्कार उनको प्रत्यक्ष जब फिल्म अवार्ड मार्च में या अप्रैल में होगा, तब ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा. ये पहली मेरी पुरस्कार की घोषणा है. और अंत में मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि दैट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल वित्तोरियो स्टोरारो इनको दिया गया है. इनको सिनेमाटोग्राफी के 3 ऑस्कर्स मिले हैं. The festival will also pay homage to actors like Irfan Khan, Sushant Singh Rajput, Rishi Kapoor, Hollywood star Chadwick Boseman, among 28 other artists from the world cinema by showcasing their films. Clinton D'Souza for Goa 365.